Good morning, dear students of class 10. Today we are discussing some important and last topics of chapter 2, magnetic effect of electric current, passive electric fuels. It is a protecting device which protects electric appliances in household. Dear student, but in this time, instead of fuse, we use MCB, miniature circuit breaker. A fuse wire must have proper thickness which depends on maximum current which the household wire can be safely carried. And next topic is short circuit. Short circuit. Again, I explain fuse. A fuse is a safety device having a short length of a tin plated copper wire which have low melting point will melt and break the circuit if the current exceeds safe value. सर्किट में जब हम फ्यूज लगाते हैं इसमें क्या करते हैं कि टीन और कॉपर का एकदम लो मेल्टिंग पॉइंट का हम लोग वायर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का वैल्यू ज्यादा होता है, जब एक्सीड कर जाता है करंट का वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो करंट का वैल्यू लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये क्या होता है, ये मेल्ट कर जाता है। मेल्ट कर जाने के बाद क्या होता है कि मेल कट जाने के बाद उसका जो कनेक्शन है सर्किट से ब्रेक कर जाता है और जिससे करंट फ्लो अदर अप्लायंसेस में नहीं पहुंच पाता है और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है सेफ रहता है। ओके, अगेन a fuse is a safety device having a short length of a thin plated copper wire having low melting point which melt and breaks the circuit if the current exceed a safe value. The thickness of length of the fuse wire depends on the maximum current allowed through the circuit. Our electric fuse work on the heating effect of current. The fuse for protecting our domestic wiring is fitted just above or maintain our maintenance switch on the switchboard. A fuse wire is connected in series in the electric circuit. Now, dear students, our next topic is short circuiting. Short circuiting. Short circuiting. Dear students, if the plastic insulation of the live wire and neutral wire is a wire जिससे करंट फ्लो करता है, and neutral wire gets torn when the two wires touch each other. This touching of the live wire का कलर होगा रेड, and neutral wire directly is known as short circuit. When the two wires touches each other, the resistance of the circuit so much high or so formed is very small. Since the resistance is very small, when we know that when resistance is less, then current is flowing large amount in the conductor wire. So, since the resistance is very small, the current flowing through the wires becomes very large and heat the wires to dangerously high temperature and a fire may be started. This is short circuit, and the next topic is overloading.
overloading, the current flowing in a domestic wiring at a particular time depends on the power rating of the appliances being used. If too much or too many electrical power appliances of high power rating like electric iron, electric heater, electric oven, air conditioner, etc. are switched on the same time, they draw the extremely large current from the circuit. This is known as overloading in the circuit. Overloading can be also occur if too many appliances are connected to the single socket. Now, due to an extremely large current flowing through them, the copper wire of household get heated is very high temperature and fire may be started. So dear student, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से अपना अदर अप्लायंसेस बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, समझिए। अ सर्किट हैज ए फ्यूज ऑफ 5 एंपियर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वाट और 220 वोल्ट्स बल्ब दैट कैन बी सेफली यूज्ड इन द सर्किट। एक सर्किट है जिसमें 5 एंपियर का फ्यूज लगा, घर में हम लोग 5 एंपियर का ही फ्यूज लगाते हैं, और जो शॉप वगैरह होता है तो 15 एंपियर का। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, तो पता है अगर वो 100 वाट 100 वाट का बल्ब लगाएं और उसे 220 वोल्ट का करंट पास करता है, तो आप कितना बल्ब उसमें सेफली लगाएंगे कि वो कभी गड़बड़ाएगा नहीं। तो मान लेते हैं एक्स बल्ब कैन बी यूज्ड फॉर सेफली, द पावर ऑफ वन बल्ब इज 100 watt, दैट्स मीन पावर ऑफ एक्स बल्ब इज व्हाट, मल्टीप्लाई 100 x watt. But we know that the formula of power equal to P equal to volt into current, that's when P equal to VI. We use power equal to 100 watt for an X bulb, 100 X bulb, and there is potential difference you have given to 20 volt and current is 5 ampere. Now 5 and 100 0 cancel, and 5 2 are 10 and 2 11 are 22, 11 bulbs. Dear students, today chapter number 2 is completed, and in next video we will discuss sources of energy of third chapter. So dear guys, please complete and solve all the questions of chapter 1 and 2. Thank you for watching. Stay tuned for more updates.